sell, I mean to say that I'm learning from you. I'm absorbing a lot of information from you, and for me, this is the main selling point that I'm learning and growing as an individual. Right? अगर conversation लोग देखते हैं, यही conversation अगर हमारे behind the scene हो रही थी, जो हो रही थी पिछले 1.5 घंटे से, right? I learned a great deal out of it, right? So for me, this is everything. This information and then the social capital is everything. Wealth वाली side तो चलो हो गई है. But another question is कि when you say wealth influencers, now what exactly do you mean by wealth influencers? कि if you could predict it like 5 years into the future कि क्या हो रहा होगा, and if there are people who have generated good amounts of money, the wealth that you are talking about, what are we going to be seeing on the social media in terms of like yachts के साथ तस्वीरें होंगी, foreign trips होंगे, क्या value वो drive कर रहे होंगे? If you could value वो ये drive कर रहे होंगे कि they will be able to aid people in creating wealth of their own. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. आई डोंट केयर अबाउट कि वो इन्फ्लुएंसर है नहीं है, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं या गूगल मेटा के ऊपर AR में डाल रहे हैं. फॉर मी द इनहेरेंट आइडिया इज दैट सबसे पहला आपने काम ये करना है, सोसाइटी को आपने चस्का देना है कि यार वेल्थ क्रिएट करो, अपने कंप्लेसेंसी से बाहर निकलो. जो आपको चस्का दिया, बहुत सारे थ्रू डिफरेंट वेज चस्का मिला. एक वो इस तरह मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कि यार आप बैठे हुए अपनी जिंदगी में और आप देख रहे हो, आप कह रहे हो यार इसका घर कितना अच्छा है, इसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, इसका ये कितना अच्छा है. इसको लोग कहते हैं यार देखो जरा ये सोसाइटी के अंदर जो है ना डिप्रेशन डाल रहा है. मैं इसको इस तरह से नहीं देखता. मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये सोसाइटी के अंदर एक वांट क्रिएट कर रहा है फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर अ मोर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि यार मुझे भी बेहतर चीज़ें चाहिए. मुझे भी वो कहते हैं ना, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग आते हैं, अनफॉर्चुनेट अलमिया है कि हम बर्गर्स को देख के हंसते हैं, कहते हैं ये बर्गर है, हाँ ये देखो कितना बेवकूफ़ है. बर्गर कौन है? बर्गर वो है जिसको एक अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट मिला. बर्गर वो है जिसको एक ऐसी एजुकेशन मिली जिसके अंदर वो कोई सफाई की बातें कर सकता था. बर्गर वो है जिसको साफ खाना मिला. क्या ये बुरी चीज़ है? क्या हम सब ये नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए? यस, ट्रू, राइट. तो वाई डू वी फ्राउन अपॉन देम, लुक डाउन अपॉन देम? है देखो बर्गर है वो, इसके साथ कभी चोरी नहीं हुई, ये चोर को देख के इसकी फट जाती है. बड़ी अजीब सी बात है यार. It boggles my mind that things that you need to look up to, that things that you need to want to have, you look down upon them. It is a post-traumatic stress disorder, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने एक्सपीरियंसेस को नॉर्मलाइज करते हैं just for the sake of, because otherwise you'd go mad. What's happening in Karachi right now with the robberies, if they don't look down upon the people living in Islamabad, for example, they will go mad, because that is not a normal way to live. Nobody should have to live like that. And so one of the things that happened is that now that we're beginning to humanize a lot of people जो कि बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कि बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं, जो बेहतर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो एक नीड डेवलप हो रही है. और उस नीड की वजह से ऑटोमेटिकली अब आप जो फारिग बैठे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, फारिग बैठे हैं, अच्छा बस इधर उधर सर खुजा रहे हैं, अब आप एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज एंड वेज एंड अपॉर्चुनिटीज कि यार किसी तरीके से मैं भी उस तरफ जा सकूं. The problem for the longest time in our country was that we had a rent-seeking society of a very, very small set of, जिसको आप कहते हैं elite, और unfortunately हम elite का पहले भी मैं कह चुका हूँ, हम definition नहीं समझ पाए. हम से बहुत सारे लोग elite थे और rent seekers थे. अब वो सोसाइटी का वो बदल रहा है. अब गांव का बंदा बैठा जो कि अपनी गाय के साथ बैठा होता था और पूरा दिन बस टाइम ज़ाया करता होता था और उसकी प्रोडक्टिविटी टोटली होती थी कि यार गाय को लेकर जाओ, चराओ और वापस ले आओ. अब वो बैठा सोच रहा है कि यार क्या मेरी एज अ ह्यूमन बीइंग बस यही जिंदगी है, कैन आई नॉट डू समथिंग बेटर? तो मैं गाय के साथ जो है ना लैपटॉप खोल के कोई फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, और मैं अपनी, क्योंकि मेरी ह्यूमन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाउ कैन आई बी मेक इट मोर प्रोडक्टिव? एंड सो एक वो दौड़ शुरू हुई है. सबसे पहला जो आपने कौम को देना था वो आपने एक चस्का देना था to begin to want to live and dream of a better life, and which is now something जो कि चाहे आप जितना disagree कर लें with these Sunny Alis of the world and Azad Chaiwalas of the world and all of these, यार इन्होंने जो बेसिक करना था वही करना था कि पूरी कौम को इस ट्रक की बत्ती, जो बड़ी अच्छी ट्रक की बत्ती थी, उसके पीछे लगा दिया. ठीक है, चाहे Amazon was not your final salvation, चाहे freelancing was not your final salvation. The fact is कि now there is a demand for skills, there is a demand for wanting to do something. आप 10 साल पहले जाएं, आप किसी आम बच्चे से बात करें, वो कंप्लेसेंट था, तो मैं गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, मुझे पेंशन मिल जाए. गवर्नमेंट की नौकरी क्यों चाहिए थी उसको? क्योंकि उसको था यार कोई काम ना करना पड़े, चाय मिल जाए, पैसे आ जाए, कोई फायर भी ना कर सके, एग्जैक्टली. आज के बच्चे को उठाएं, कहते फ्रीलांसर बनना है. हम कह रहे हैं ओ माय गॉड, बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, वो फ्रीलांसर बन रहा है. ओ यार यूनिवर्सिटी जाके अगर उसे गवर्नमेंट जॉब करनी है ना तो फ्रीलांसर बेहतर है. अब वो फ्रीलांसिंग में जाके अगर फेल होगा पिवट करेगा, फेल होगा पिवट करेगा. डायरेक्शन मिल गई है उसको एक. ठीक है, वो सनी अली उसका सोल्यूशन नहीं होगा, वो अगले के पास चला जाएगा, वो उसको 4 गालियां देगा, अगले के पास जाएगा लेकिन जरूर, क्योंकि उसके अंदर एक वो आ गई है.
اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے جب کام کے اندر یہ ایک آپ نے ایک ڈیمانڈ ڈال دی نا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو مور دین واٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ اینڈ آئی وانٹ ٹو ارن اینڈ آئی وانٹ ٹو بلڈ جنریٹ ویلتھ. دیٹ مینس کہ ایک سرٹن اس میں سیگمنٹ ہوگا جو کہ ویلتھ جو اس کی کاسٹ آف لیونگ تھی وہ اس سے زیادہ کمانا شروع ہو جائے گا, اور وہ ایکسیس کیپٹل اس کا آئے گا جس کیپٹل کو اس کو کہیں نہ کہیں ڈالنا ہے. اب اس کیپٹل کی بات کرتے ہیں. فار دا لانگسٹ ٹائم ہمارا کیپٹل پاکستان میں کدھر جا رہا تھا؟ ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ میں جا رہا تھا, اپنے بینک کا موسٹلی تو صندوقوں میں جا رہا تھا. اوکے ٹھیک ہے, سب سے پہلے صندوقوں میں. ریئل اسٹیٹ کا تو ڈرامہ پچھلے 20-25 سال سے شروع ہوا ہے نا. پہلے صندوقوں میں جا رہا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ انفلیشن ہو رہی تھی وہ پیسہ افیکٹولی ضائع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, برن ہو رہا تھا سال. دوسرے نمبر کے اوپر وہ جا رہا تھا. ہمارے سب کے بڑوں کی کہانی ہے کہ وہ پیسہ باہر گئے, کسی 80s میں 90s میں مڈل ایسٹ وغیرہ بڑے لوگ گئے, واپس آئے, پیسہ لیا تو وہ کسی چچا نے آ کے بولا میں یہ دکان ڈالنے لگا ہوں, ایک تایا نے بولا میں یہ کرنے لگا ہوں, اس میں پیسہ ڈالا, وہ ڈوب گیا سارا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, شیڈی بزنسز میں ڈالا اور ڈوب گیا. تیسرا کیا تھا کہ دوسرے کو نہیں دیا, اپنا بزنس, کہ یار پوری زندگی میں نے نوکری کی ہے, لیٹس سے اکاؤنٹنگ کی, بینکنگ کی, اب میں نا وہ پیسہ سارا لے کے میں ایک ریسٹورینٹ کھول لیتا ہوں. یار آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ریسٹورینٹ کھولنے میں؟ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ریسٹورینٹ کا کام کیا ہے؟ آپ تو گھر پہ کھانا بھی خود نہیں بناتے, آپ کی بیگم بناتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریسٹورینٹ کیسے چلائیں گے؟ آپ کا پیسہ جا رہا ہے اور جا کے ضائع ہو رہا ہے, اور ایک سائیکل ہے آف نان پروڈکٹیو, نان اسکیلیبل, نان پروڈکٹیو منی اسپینڈ, جو کہ سال میں لگتا ہے, ضائع ہوتا ہے, اور اگلے سال نئے لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بہت ساری ریزنس تھے, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ نے بڑا مشکل بنایا ہوا تھا, بینکنگ کو بڑا مشکل بنایا ہوا تھا کہ آپ کا پیسہ بینک میں بھی نہیں آ رہا تھا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا, بینک میں پیسہ ڈالو تو بینک اس کو ایلوکیٹ کرتا ہے ان مور پروڈکٹیو ایریاز تھرو لونز. اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے ہو تو کمپنیز کے پاس پیسہ جاتا ہے جو کہ اس کو پروڈکٹیولی استعمال کرتے ہیں.